अम्मा नहीं, अब मुझे लगता है नहीं, अब नहीं. अब वो शायद अब मेरे लिए बैठी हैं, मेरे भाई के लिए, उन्हीं में उनकी वो पूरा दिन नमाज पढ़ती हैं, उसमें उनका टाइम गुजर जाता है और एंजॉय करती है. मुझे जब मैं कभी टीवी पे देखती है, कितनी प्यारी लग रही है, कितना अच्छा ऐड है, दोबारा लगाओ, तो उसको एंजॉय कर रही होती है इस मोमेंट्स को, तो मैं उनको देख के खुश होती. और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मेरे रिजल्ट डे पे अम्मा स्कूल जाती थी और टीचर्स बहुत उनको कहती थी ना कि आपकी बेटी बहुत लायक है और आपकी बेटी ने ये किया, इतने मार्क्स आए, तो मम्मा की आंखें चमक जाती थी. तो मुझे उसकी बड़ी लालच हो गई ओवर टाइम कि बस मेरा रिजल्ट आए और मम्मा पागल हो जाए खुशी से. सो आई थिंक आई वाज दैट, वो जो एक पेरेंट्स पेट नहीं होता एक घर का बच्चा, कि मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लूँगी और मैं सबसे ज़्यादा आई विल बी द रीज़न ऑफ माई मॉम्स हैप्पीनेस. Always been the kind कि अगर मुझे कोई बोल देना कि ये नहीं करना, but everyone's like that, you're like ये तो करना ही करना है. तो अम्मा ने कहा था गोला गंडा नहीं खाना, कुछ भी हो जाए, इसका पानी खराब होता है. अब आई एम मेकिंग माई वे फ्रॉम द स्कूल की ये वाली सड़क टू दी अदर वाली सड़क, एंड जस्ट माई लक गाड़ी pulls up and अम्मा like Mahira. So अम्मा, Are you scared of her? well, not really. Not really. I mean, we were, but not really. तो स्ट्रिक्ट कौन था, अम्मी या अब्बू? कोई भी नहीं, दोनों स्ट्रिक्ट नहीं थे. पढ़ाई के मामले में बड़ा एक वो चलता था. एक इंसिडेंट है जो मुझे भूलता नहीं है, जो मैं बोल दूंगी तो मुझे मार डालेंगे. नहीं, कोई नहीं मारेगा, बोलो. पढ़ाई में मैं वो कह रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना, because I was actually good student, okay, and I was like, I know this, I know my math, don't make me study more. But she was like, नहीं. और आई रिमेम्बर जहाँ मेरी डेस्क थी ना, वहाँ पुराने ज़माने में गोल कमरा था और वहाँ खिड़कियाँ थी और खिड़की खुली हुई थी और हिसान और मेरा दूसरा कज़न, मेरा भाई और मेरा कज़न बाहर खेल रहे थे और यहाँ ये मुझे उसी खिड़की के सामने पढ़ा रही थी. सो रॉन्ग, खैर या. सो आई एम लुकिंग कि ये लोग खेल रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, एंड आई वाज लाइक यू नो, एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं पढ़ना. She said, "You wait and watch." You know what she did? You as a kid. Yeah, you know what she did? There's a yellow dress, I'll never forget, जो मेरी दादी मेरे लिए लाई थी. Yellow dress, lemon color का, ठीक है? And she sat there with it and she said, "I'm going to burn this dress if you don't." What? अच्छा, she denies it. Of course, she denies everything ऐसे है ना. She's like, कभी नहीं, मैंने तो कभी तुम्हें मारा तक नहीं. मैंने कहा आपने क्या नहीं मारा, एक जगह से दूसरी जगह हैंगर. She's like, लेकिन मिस होता था इसलिए लगा नहीं. मैंने कहा मगर ट्राई तो किया है, but obviously हमें मारनी. मुझे भी काफी चीजें मेरे पर फेंकी गई, मगर लगी बिकॉज मैं कुछ भी नहीं करती थी ना, इसलिए बिकॉज मैं बहुत अच्छा बच्चा थी, मुझे इसलिए भी बड़ी डांट पड़ी. That's actually the problem. But can I tell you, उन्होंने मारा वारा नहीं हमें. नहीं, कभी नहीं मारा. कभी नहीं. दूसरी चीज वो ये करती थी डराने के लिए, वो कहती थी सिट इन द कार. अच्छा, अब हम दोनों गाड़ी में बैठ गए, ठीक है, सिट इन द कार. अब चला रही हैं, कहाँ जा रहे हैं? We are going to the Burns ward. I was like, what? She's like, you will see what to be grateful, what it means to be grateful. You both are I can hear her. I was like, yeah, because she is I know her voice. You know, she's melodramatic. Yes. Yeah, it's like, तो she used to do that, but मारती वारती नहीं थी, but strict भी नहीं थी, ज़्यादा strict भी नहीं थी. जब से मैं पैदा हुई हूँ, my mother was a little mentally disturbed, जिसे कह सकते हैं, but a wonderful mom she was, and कुछ चीज़ों से वो ज़िंदगी में गुजरी जिससे she lost the balance in her life. And जब वो जाहिर सी बात है, there is a disease that you call schizophrenia. I don't know how you pronounce that, but my mother has gone through that. And so there were times when my mom used to think कि मैं बाहर जाके मैं शायद शूट पे नहीं जा रही, मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, because a patient who is in that, उसके दिमाग में खुद ही कहानियाँ बनी हुई होती हैं कि यार इसका ऐसा हुआ होगा, इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा हुआ होगा. So there have been times जब मैं घर पर आती थी और मेरी माँ ने पकड़ के मुझे बड़ा मारा है. ऐसे भी वक्त आए कि मेरी माँ की चूड़ी मेरे गाल पे लग गई थी और मेरे यहाँ से खून निकल रहा होता था और मुझे शूट पे जाना होता था और वहाँ पे पूरा मेकअप टीम पूछ रही होती थी कि क्या हुआ है, एंड मेरे पास जवाब नहीं होता था कि मैं क्या जवाब दूँ उन्हें. बट आई थिंक वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था कि आपके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए और आपको झूठ कहना पड़ता है कि यार इस तरीके से लग गया, उस तरीके से लग गया, जब कहते हैं आधी दुनिया को पता होता है कि कैसे लगी है गाल पे. बट those were dark times. What makes you happy? मेरी अम्मा. मैं अम्मा को जब सुबह देखती हूँ तो मैं खुश होती हूँ. मैं रात को जब जाती हूँ घर तो वो सोई भी हूँ तो मैं उनके कमरे में ज़रूर जाती हूँ उनको देखने के लिए, मेक श्योर करने के लिए वो सो रही हैं.
उनसे बात ज़रूर करती हूँ. I don't know. I cannot think of a life where I cannot ask her everything. I would not understand that life mostly. So I'll always ask her these many questions. And also it's a very blessed space to be in, that somebody is always looking out for you. You know? کہ آپ کو ٹھیک ہے, آپ کو ایٹ میکس کیا مجھے بات ماننی پڑتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. Someone's always looking out for me and someone's always wishing my best. That's such a constant blessing that I've had since I'm born. Forgiveness ڈال لو, سب سے پہلے forgive کرو whatever happened. پھر اپنے اندر پیار ڈال لو. جب پیار ڈال لو گی تو امی کو ہاتھ پکڑنا بہت آسان ہو جائے گا. نہیں, بات یہ نہیں ہے میم, بات یہ کہ میں نے معاف بھی کر دیا. بات یہ کہ مجھ میں بہت محبت ہے میری والدہ کے لیے, خاص طور پہ مجھ میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے ان کو اذیت میں دیکھنے کے لیے. لیکن جب پیار آ جاتا ہے نا تو پھر ماں باپ کا بڑھاپا بھی سمجھ آ جاتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے ویری پاورفل اسٹرانگ پیپل. جب وہ کمزور ہوتے ہیں نا تو آپ سے ہینڈل نہیں ہوتے. جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں آپ سے, یا مینٹلی اگر ڈسٹربڈ ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں کسی طرح سے بھی, بستر پہ لیٹ جائیں, یا ان کا دماغ چلا جائے یا ان کی میموری چلی جائے, آپ سے ہینڈل نہیں ہوتے, کیونکہ آپ وہ ٹاور آف اسٹرینتھ ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہوتے کہ کرمبل کیسے کر رہے ہیں. اور آپ اندر سے کیونکہ آپ نے چڑ جاتے ہیں بالکل, کیونکہ آپ نے ان کو پیڈسٹل پہ بٹھایا ہوتا ہے نا, آپ نے ایک اسٹرینتھ اور پاور کے پیڈسٹل پہ بٹھایا ہوتا ہے, اور آپ سوچتے تھے یہ تو ان کو تو کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب آپ وہ کرمبل کرتے ہیں وہ ہینڈل نہیں ہوتا بچوں سے. لیکن جب آپ خود میں آپ کے اندر سے ممتا جاگے گی نا, وہ آپ کا بیبی بن جائے گا, تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ریورسل آف رولز ہے, اور یہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا پرائم ٹائم ہوگا تو آپ ٹاڈلر ہیں, آپ بیبی ہیں, اور آپ کو اٹھا رہے ہیں اور آپ کی ضرورت کو وہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی انگلی پکڑ کے وہ چلا رہے ہیں. جب ان کو انگلی پکڑنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ سے ہینڈل اس لیے نہیں ہوتے, اس لیے بچے چڑھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ماں باپ کو پاورفل دیکھا ہوتا ہے, وہ ہینڈل ہی نہیں ہو پاتے. لیکن اگر آپ کی جو ایک پدرانہ مادرانہ شفقت ہے یا محبت ہے جو اپنے بیبی کے لیے ہے, وہ جب آپ کے اندر آ جائے گی نا اپنے ماں باپ کے لیے, پھر آپ چڑھیں گے نہیں. پھر آپ ان کی انگلی پکڑ لیں گے اور آپ ان کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے وہ آپ کو دیکھتے تھے, ماں کی طرح یا باپ کی طرح. Wow. And it takes time. I have gone through the struggle, so that's why I'm saying this. But it takes time. But جب یہ ہوتا ہے نا, it's amazing کہ آپ کا کیا bond بنتا ہے. It's amazing, کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر کوئی پیڈسٹل نہیں ہوتا, اور کوئی بھی وہ خواہش نہیں ہوتی, اور ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. سمپل ایک ماں اور ایک بیٹی ہوتی ہے, اور ریورسل آف رول ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنی امی سے کہا ایک دن کہ امی اب میں آپ کی ماما ہوں, تو کہتی ہے زیادہ ڈانٹو گی تو نہیں؟